मैं टीचरों से इतनी बार पिटता था क्योंकि वो हमें पढ़ाते थे ए फॉर एप्पल और मैं बोलता था ए फॉर आर्मी, ए फॉर एयरफोर्स। हमारा सपना तो पूरा हुआ नहीं, ऊपर से कर्जदार और हो गए। अग्निवीर योजना को हम उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे। લોકસભા ચૂંટણીમાં આરક્ષણ અને હિન્દુ મુસલમાન જેવા મુદ્દા વચ્ચે રોજગારીનો મુદ્દો ગરમાયો છે। રમનસિંહ જેવા હજારો યુવાન જે સેનામાં ભરતી થવાના સપના જોતા હતા, અગ્નિપથ યોजना તેમની રાહની મોટી અડચણ બની ગઈ છે। मेरा 2019 में एयरफोर्स का इंटेक निकला था। हमारे 2020 के स्टार्टिंग में ये एग्जाम होना था, कोविड की वजह से डिले हो गया। जब कोविड की सेकंड वेव चली उस टाइम थोड़ा कोविड कम था, उस समय हमारा एग्जाम लिया जाता है नवंबर में और जनवरी में हमारा रिजल्ट आ जाता है। वो जनवरी की तो हमें सेकंड फेज के लिए मिली थी। उसमें फिजिकल होता है हमारा, उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं और उसी के बाद में हमारा फरवरी का हुआ था मेडिकल के लिए। वो फिर हमारे क्लियर हुए मार्च तक। 14 જૂન 2022 કેન્દ્રીય રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે અગ્નિપથ યોજના લોન્ચ કરી અને કેટલી પેન્ડિંગ ભરતી રદ કરી દેવાઈ। સિલેક્શન રદ થયા પછી કેટલાય યુવાનો અને તેમના પરિવારજનોએ ધરણા કર્યા। સુરેશ એમાંથી જ એક છે। તેમના નાના દીકરાનું સિલેક્શન એરફોર્સમાં થયું હતું અને દીકરાનું આર્મીમાં મેડિકલ અને ફિઝિકલ ટેસ્ટ ક્લિયર થઈ ગયું હતું। तो मैंने सोचा अब इनको और आगे पढ़ाएं और खर्चा लगाएं इन पर। तो मैंने जमीन पर अपने पर लोन लिया था और लोन लेने के बाद में मेरे ऊपर हुआ कर्जा और सरकार ने क्या करे, मतलब अग्निपथ योजना से पहले आश्वासन दिया गया था कि आपका काम क्लियर होएगा। ये सरकार बोलती रही तो बच्चे पढ़ते रहे आगे। સુરેશ આ ડરથી ખુદ ધરણા પર જાય છે કે જો દીકરા પર કેસ થયો તો આગળ કોઈ સરકારી નોકરીનું ફોર્મ નહીં ભરી શકે। કેટલાય પરિવાર પોતાના બાળકના મોત માટે અગ્નિપથને જવાબદાર ગણે છે। વિપક્ષ વારંવાર આ મુદ્દો ઉઠાવી રહ્યું છે, જેમાં લોકોને આશા દેખાય છે। राहुल गांधी से जब पहली बार मिला तो उन्होंने हमसे वादा किया कि सड़क से लेकर संसद तक हम आपके साथ हैं और हमारी आवाज पहले दब गई थी। मतलब हम लोगों ने आस छोड़ दिया था, हर तरह से आस हमारा टूट गया था कि अब शायद ही कहीं हमारा मतलब मुद्दा हाईलाइट हो, लेकिन आज उन लोगों की वजह से आवाज हमारी हाईलाइट हो पाई है। એક્સપર્ટ કહે છે કે ટ્રેનિંગ માટે હવે યુવાનોમાં ક્રેઝ નથી, તેઓ અગ્નિપથ યોજનાને મજબૂરી ગણે છે। मेरे पास पहले 550 बच्चे आते थे जो अग्निवीर की तैयारी के लिए आते थे। लगभग 550 बच्चे ऐसे आते थे। आज ये कि बच्चे की नफरी बहुत कम हो गई है और जो बच्चे जा रहे हैं वो उनसे मैंने जैसे डिस्कस किया है, उनसे बातचीत करता हूँ तो पता चलता है सर मजबूरी के कारण जाना, देशभक्ति तो हमें करनी है और देश सेवा तो करनी है, तो सर 4 साल क्यों न कर आ ही जाए। અમે અગ્નિપથ સ્કીમ હેઠળ સિલેક્ટ થયેલા અને સેનામાં સેવા આપી રહેલા 2 યુવાનો સાથે પણ વાત કરી। ઓળખ જાહેર ન કરવાની શરતે તેમણે કહ્યું કે સેનાની અંદરનો માહોલ યોગ્ય નથી લાગતો। અગ્નિપથ યોજનાને પડકારતી અત્યાર સુધી જેટલી પણ અરજી કોર્ટમાં દાખલ થઈ છે તેને ફગાવી દેવાઈ છે।